its bat. We'll show you the toss. We've got Qadir and Mushkin together. We've got Wasim and Waqar, with myself, Salim Yusuf, Shoaib and Ramiz. 3 is Zahid, 4 Javed, 5 Salim Malik. Okay, and the keeper? Salim Yusuf. 2 teams having been exchanged. Imran tossing the coin. And Desmond Haynes wins the toss. Desmond? I'm going to keep Amy in suspense for a little while. You still haven't decided, have you? Well, I told you I'm going to keep Amy in waiting a little longer, okay? Okay. What do you think of the wicket? It looks a bit slow and a little bit low, so I'm just not sure what I feel it. Best of luck. Thank you very much. So the 2 teams, different combinations. Imran announced 2 spinners in his side, both the leg spinners, Mushtaq and Abdul Qadir. And Haynes, surprisingly, has not included Robert Haynes, that is the leg spinner, but he's got Hooper and the 4 fast bowlers. Haynes has won the toss, but has once again decided to consult his vice-captain and senior colleagues before deciding what to do. Well, since winning the toss, Haynes did decide to bat and conveyed that to Imran, so it's the West Indies batting, and their team: Desmond Haynes, Gordon Greenwich, Richie Richardson, Carlisle Best, Gus Logie, Carl Hooper, Jeff Dujon, and the 4 fast bowlers, Marshall, Ambrose, Bishop and Walsh, with Lara as the 12th man. The Pakistan side: Shoaib Mohammad, Ramiz Raja, Zahid Fazal, Javed Miadat, Salim Malik, Imran Khan, Salim Yusuf, Wasim Akram, Mushtaq Ahmad, Abdul Qadir and Waqar Yunus, with Ejaz Ahmad as the 12th man. Debut for Zahid Fazal, the 2 teams there for you. Zahid Fazal becomes the 118th Pakistan player in Test cricket, playing all 4 of them. But as far as the wicket itself is concerned, I think we'll have to wait and see. Three slips then for Wasim Akram, who's going to start proceedings. Salim Malik first, Shoaib second, Ramid third, Salim Yusuf behind the stumps. Wasim Akram going to bowl the first over back in the Pakistan side, and he is going to bowl to Gordon Greenwich. An appeal for LBW. God, must have been very close. Yes, I think probably will watch it in the replay. The ball probably hitting him high, as we'll watch here. Gordon not offering his stroke, and don't forget, Wasim is bowling over the wicket and the left-hander. Yes, it did bounce and it did hit him high. Nowhere. Appeal for LBW, and he's out. And I think there's no doubt about it. Waqar Yunus strike. And Greenwich is LBW, Waqar Yunus for 3, and the West Indies have lost their first wicket. It's interesting to see in the replay. I think Gordon was not really as forward as I'm sure he would have liked to. And the ball well pitched up, probably within the stumps. But there it is, coming up. Waqar bowling close from the stumps, pitching the ball up. The ball pitching about middle stump. Yes, all wickets covered, and I think there's no doubt about it. I'm sure when Gordon goes back and has a look at it in the replay, he would realize that. And that's what Waqar has been doing throughout his, what we can call a very short career. He's just started his career, and I think he's got lots of wickets either leg before or bowled. That shows how much straighter he bowls and how much within the stumps he bowls. Just very good. And what is interesting is to see Mushtaq bowling, or Mushtaq being in the team along with him. Yes, because I think it's very rare that we have seen in a test match that 2 spinners of the same kind participating. Waqar again to Richardson. We'll go through for a single. Leg byes
That one was off the pad. Umpire Khizr Hayat signals the extra. Total now goes to 9. That's Mushtaq, also fielding on the onside. In fact, next to Abdul Qadir, if there is next, because Abdul Qadir is at wide mid-wicket, Mushtaq at square leg. They played together at Multan in the last one day, and yeah. that was very interesting to see them bowling together there. I recall that. I think it was in England. I think, or England team touring Pakistan way back in, I think, 60s. They had David Allen and John Mortimer. They played in a test match together. Waqar again. I think Abdul Qadir and Mushtaq played together at Chargers. Yes. एक अच्छा टॉस ये रमीज है स्क्रीन पर. एक अच्छा टॉस हेन्स ने जीता और इससे थोड़ी बहुत पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटजी में एक स्लिप वसीम अकरम शुएब और मलिक. हेन्स का एक अच्छा शॉट ओवर पिच बॉल थी ऑफ स्टंप पर. पॉइंट गली के दरमियान से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गया और इस 4 रन के साथ स्कोर वेस्ट इंडीज का 19 एक खिलाड़ी के नुकसान पर हो जाता है. इसके अलावा मुझे और कोई ख़ास चीज़ इस विकेट में नज़र नहीं आती है कि जो फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर सके. दिलचस्पी मेरे ख्याल से स्पिनर्स के आने तक काफ़ी दिलचस्प रहेगा. स्पिनर्स को देखें कैसे गेंद करते हैं इस पिच पे. बाउंस करने की कोशिश गेंद में ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा. रिचर्डसन ने उसकी जाने दिया विकेट कीपर के साथ की तरफ. रिचर्डसन हिट विकेट होते होते बच गए. आप देखते हैं जब टोपी विकेट पे गिर जाती तो आउट हो जाते हैं. शॉर्ट पिच बॉल था, इसमें ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा. ये देखें इनकी कैप उन्होंने बल्कि अपने हाथ से उसको रोक लिया. हम डिफरेंट एंगल से देखें, अगर साइड एंगल से देखें लॉक करने की कोशिश, लेकिन फुल टॉस 4 रन के लिए रिचर्डसन ने खेल दिया. ये देखिए एक और जाविये से बाउंसर ज़्यादा नहीं उठा और गेंद छोड़ने की कोशिश में उनकी कैप विकेटों पर गिरते गिरते और आखिरी मोमेंट में उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से वो तो सीख चुके हैं काउंटी क्रिकेट से. हाँ, ये बात आपकी कुछ लगती है दिल को, लेकिन वसीम अकरम के सिलसिले में बात होने पर ये पता लगा कि वो वहाँ पर भी अपने मैचेस चूज करते हैं. ज़्यादातर सिर्फ वनडे मैचेस खेलते हैं और 3 डे मैचेस नहीं खेलते हैं. अपने आप को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं. वकार यूनुस हेन्स को गेंद थोड़ा सा बाहर निकला, बाहरी किनारा लेती हुई 4 रन के लिए थर्ड मैन की तरफ. 4 रन के साथ स्कोर हो गया वेस्ट इंडीज का 31. गेंद को पैच किया हेन्स ने. स्लाइड देने की कोशिश और कवर की तरफ खेल दिया हेन्स ने. 4 रन के लिए एक अच्छा शॉट. रमीज ने बॉल पकड़कर वापस बॉलर की तरफ फेंक दिया. 4 रन के साथ 45 हो गया वेस्ट इंडीज का स्कोर एक खिलाड़ी के नुकसान पर और हेन्स का स्कोर हो गया 26 और 11 विकेट. ऑफ से बाहर गेंद जिसे छोड़ दिया हेन्स ने. रिसेप्शन अब फेस करेंगे कादर को. कट शॉट खेलते हुए 4 रन बनाए. रिसेप्शन में गेंद ऑफर से थोड़ा बाहर था. इसके साथ स्कोर हो गया 51. पहले घंटे में 51, हेन्स 27 और
रिचर्डसन के 15, 35 हेन्स और 25 रिचर्डसन. Right, so well forward shortcut to fair and me Salim off for slip na Salim Malik. Wicket keeper Salim Yusuf. और आउट. खूबसूरत स्टंपिंग और एक ही विकेट चाहिए थी सलीम यूसुफ को टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 विकेट्स पूरे करने की. तो सलीम यूसुफ के 100 विकेट्स पूरे हुए. हमारी तरफ से उनको मुबारकबाद. सिकंदर, ये हमारी तरफ से भी बहुत ही अच्छी स्टंपिंग थी, बहुत तेज. हालांकि जो विकेट कीपिंग होती है स्पिनर से ही बहुत मुश्किल होती है, तो बहुत अच्छी. और 100 इस तरह सलीम यूसुफ के. और ये रिप्ले मुनीर साहब, यहाँ कोई वजह नजर नहीं आती है हेन्स किस किस्म का शॉट खेलने की. टेस्ट मैच में 5 दिन पड़े हुए हैं और कोई मेरे ख्याल से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट है इनका आगे निकल कर खेलना इस वक्त मुश्ताक को. रिचर्डसन की. तो बहरहाल दोनों की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी. रिची आए भी उस वक्त से जबकि सूरत हाल वेस्ट इंडीज के लिए काफ़ी ख़राब थी. जी, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर ये कि देखें फिर से बड़ी तेजी और खूबसूरत बहुत तेज. मैंने कोशिश की थी रिची रिचर्डसन ने अपने पाँव वापस लाने की पीछे, मगर ये कि काफ़ी आगे निकल गए थे. तो नए बैट्समैन हैं बेस्ट वेस्ट इंडीज. 2 खिलाड़ी आउट और स्कोर है उनका 77. बेस्ट बैट्समैन आउट. चेक. अंपायर रियाज ने आउट दिया बेस्ट को. रमीज और एक्शन रिप्ले में देखेंगे, मगर बेस्ट कुछ मुतमईन नजर नहीं आ रहा. मुतमईन नजर नहीं आ रहे. हमें देखना पड़ेगा. ऐसा लग रहा था गेंद पहले उनके पाँव से लग गया. अब देखते हैं एक्शन रिप्ले में. एक्शन रिप्ले अगर हम सामने से देखेंगे तो फिर हमें ज्यादा बेहतर पता चलेगा. सामने से मुनीर साहब, मुझे तो लगता है कि पैच से लगी थी गेंद पहले. उनका बल्ला पीछे था. हाँ, बहरहाल वो भी मुतमईन नजर हाँ, बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रहे थे बैच. लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ से इतना ज़्यादा सही नहीं हो सकता. लेकिन जो आपने देखा बहरहाल एक्शन रिप्ले, आप अभी तक जो है बेस्ट पीछे पलट पलट के देखें, शायद उन्हें वापस बुला लिया जाए. हाँ जी. ये देखिए सामने. नए बैट्समैन थे हुपर, जिन पे एलबीडब्ल्यू की अपील हुई. हुपर to continue. He'll bowl to Hooper, who took a single off the last ball of the over. Hooper is 8, and the West Indies are 96 for 3. Well, he's given him leg before. Hooper wrapped in the pad, coming forward, and Hooper goes leg before to 8. Waqar strikes the blow, and the West Indies have lost their 4th wicket, with Carl Hooper being leg before wicket to Waqar Younis, and 96 for 4 now, and the West Indies beginning to look shaky and depending more and more on their captain Desmond Haynes, who remains 46 not out. So Waqar's 2nd wicket, and Hooper out for 8. It's been interesting to see Marie say, I think that ball sitting outside off stump, coming into the batsman and Hooper going forward, saying, there it is, Waqar coming and banging the ball. Well, it's in front of the stump, and as we said earlier on, that most of his victims are either he bowls them or gets leg before decisions. That one
pitching slightly outside the off stump, but I'm not too sure to say that whether it was going to miss the stumps, because he was covering the wickets, covering the stumps fully, and the ball just about, I think, hitting him on the knee hole, if I'm right. Well, he was pushing out to it. He was beaten for pace. He played very late indeed, and Carl Hooper goes leg before. So the West Indies are 96 for 4, been going along at a good clip. .145 minutes for Haynes' 32nd 50 in Test matches, and he's hit 4 fours. And he set his mind on scoring a century here in Pakistan. He thought he had one on the last tour here at this ground, but he was left high and dry by the other batsman. That's 88 not out. Shot. And he's really punishing the loose ball now. And that's a fine stroke for a boundary. So Haynes in very good touch, as he needs to be from the West Indies point of view. Another boundary to him, and he moves on very smartly up to 56, correction. And the West Indies to 110 for 4. वकार यूनिस, डी फाइन लेग पे वसीम अकरम, एक्स्ट्रा पावर पे खेला अब्दुल कादिर नसीर की. Akram's ball. Fifth no ball from Wasim Akram. 145. Shot. That's a lovely shot. That's going to be 4 runs. Abdul Qadir won't get to it. Beautifully timed. Perfectly executed. We'll have another look at that. He made it look so easy and effortless. He did. In fact, I'm sure we'll see the replay soon. Although he didn't move his feet, but he was well on top of the ball and played it away from his body. Sorry, we aren't able to show you the replay. Once again, there's a minimum of footwork and backlift, and he gets a single down towards deep mid-off. He'll be far more useful to his team than when he's trying to bowl quick. He's now going over the wicket to the right-handed Logie. And That's out. Beautiful catch by Salim Yusuf. Diving towards his right. The West Indies have lost their 5th wicket. Logie caught Salim Yusuf. Bowled Wasim Akram 25. It's 151 for 5. and a vital wicket too, because Logie was threatening. He played his strokes comfortably, and along with his captain added 50-odd runs. And Wasim Akram produced the delivery that he threatened all the time, because he did beat both the batsmen, and this one coming over the wicket to the right hand, angling away from him, which hopefully we'll see in the replay. Angling away from him, and Logie, I think it's probably a little bit surprised by the bounce, because the previous delivery wasn't that. There it is, what we were talking about, the ball coming over the wicket, angling, and a very good catch by Salim Yusuf, because I don't think that would have carried the first slip. The wicket, 2,994 runs in Test cricket. Another 6, and he would have joined he would have become the 80th player to score 3,000 runs in Test cricket. And a very respectable average too. Many batsmen would be proud to own that batting average.
بڑے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے عجیب عجیب سے خطابات ہوتے ہیں، ان کے ساتھی جو دے دیتے ہیں انہیں. وقار یونس، جان ہیں بیٹسمین. دیکھتے ہیں کہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. 4 سکندر ایک شاٹ پہ. ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس بال سے پہلے جاوید میاداد کو انہوں نے اسکوائر لیگ اور فائن لیگ کے درمیان تھوڑا سا کھڑا کیا تھا. اگر ہم بعد میں دیکھیں گے تو وقار یونس کا اور عمران کا مقصد ہی یہی تھا کہ جوجون کو جسم کی طرف گیند چلائیں اور تاکہ وہ اس کو اسکوائر لیگ کی طرف کھیلیں تو اپش جائے. تو جوجون تو کامیاب ہو گئے اسے چوکا مارنے میں، مگر وقار کامیاب نہیں ہو سکے انہیں آؤٹ کرنے میں. اگر ہم اسکرین پہ دیکھ سکیں جاوید میاداد کو، امپائر اسکوائر لیگ امپائر کے پاس بالکل پاس کھڑے ہوئے ہیں. اس بال سے پہلے ہی انہیں لایا گیا تھا. یہ جاوید میاداد، یہ دیکھیے تاکہ یہ اپنے بہت اچھی گیند وقار یونس. 11 اوور کوئی میڈن نہیں، 42 رنز اور 2 وکٹ. تو 2 وکٹ وقار یونس نے اور 2 مشتاق اور 1 وسیم اکرم. جان اسکرین پہ اور ہینس ان کے کپتان. یقینی طور پہ تھوڑے سے دباؤ میں ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم، کیونکہ 5 ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ریکگنائز بیٹسمین 5 آؤٹ ہو چکے ہیں. وقار یونس 11 اوور 42 رنز 2 وکٹ. مجموعی اسکور 170. 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. 17 ڈوجون، 82 ڈیسمنڈ ہینز، 178 ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز کے لیے آخری امید ہے ڈوجون کا وہاں رہنا بہت ضروری ہے ڈیزمنڈ ہین کے ساتھ. ہاں چونکہ پھر تو جیسے آپ نے بتایا کہ بال شروع ہو جاتی ہے. اور وہیں پر آؤٹ، جہاں میں نے آپ سے کہا تھا سکندر باغ بتا رہے تھے کہ یہ ہے حکمت عملی، تو اسی پوائنٹ پہ جاوید کے ہاتھوں جو ہے وہ ڈوجون وقار یونس کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے. آئیے سکندر صاحب، میں کافی دیر سے یہی بتا رہا تھا کہ جاوید کو خاص طور پہ ڈوجون کے لیے وہاں پلیس کیا گیا ہے کہ اور وقار یونس ان کو کھلا بھی اسی جگہ رہے تھے کہ وہ فلک کریں اور اپش گیند ادھر جائے. بہت اچھی حکمت عملی جسے کہتے ہیں وقار کی اور کپتان عمران خان کی، اور اس میں کامیاب ہو گئے اور بہت ہی امپورٹنٹ وکٹ ویسٹ انڈیز کی انہوں نے حاصل کی. اس لیے کہ اب جو ہے کھیل شروع ہو جائے گی. 4 ان کے پاس بالر رہ گئے اور یہ بہت ہی اچھی کامیابی ہے پاکستان کی کیچ کے وقفے سے پہلے. تو ناظرین یہاں ڈوجون کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی چائے کا وقفہ بھی ہے. ویسے بھی یہ آخری اوور تھا، لیکن ذرا سا ہم آپ کو پہلے ریپلے دکھائیں گے اس کا. یہ سائڈ سے آپ نے دیکھا اور میاداد، یہ ان کی حکمت عملی تھی. سیدھا ان کے ہاتھ میں کیچ گیا اور یہ سامنے تھی. اس کا مطلب ہے کہ عمران پہلے ہی عمران کو اور جاوید for the West Indies 89th inning. Also been the vice captain of the West Indian side. I think he was the vice captain on the last tour to Pakistan. He was Vivian Richards' deputy. The field disallowed. Tried the stump to the bowler's end, missed. Mushtaq also couldn't gather that throw. 2 more to Marshall. He's now 7. It's 188 for 6. That's a nice looking stroke. Going through to the cover boundary. Over the rope, 4 runs.
It's a very heavy bat. Yes, I think the heaviest I've seen is Vivian Richards and Clive Lloyd. In fact, Lloyd used to have something like 6 or 7 grips on his bat. Coming down towards deep third man. Over the rope. 4 more runs to Desmond Haynes. He's now 88 not out. Equals his previous highest against Pakistan, which was also 88 not out, and also on this ground. But Javed Miar are now fielding with a short mid-wicket. Bowled. He almost dragged on the previous delivery, and this time he's bowled. The middle stump rudely pushed back, and the West Indians have lost their 7th wicket. Malcolm Marshall bowled Waqar Yunus for 13. They are now 200 for 7. Yes, Marshall seems to be unhappy with it because he was throwing Waqar fairly comfortably, but I think this one probably hit his pad first before hitting the stump. And I'm sure Pakistan will be pleased with that wicket because both Marshall and Haynes were taking the game away from the Pakistanis. They had added 22 runs, and Marshall was playing quite confidently. So that was Waqar Yunus' 4th wicket. 16 overs, no maidens. He's taken 4 for 61. 4 for 61 for Waqar Yunus. And not a bad performance on a wicket which everybody predicted, rated, and whatnot as a spinner's wicket. And that's what I was saying earlier on, that the cricketers who, well, let's say the weightlessers, big gap between the bat and pad. But I think seeing from the front, you'll probably see that it did hit his pad. And yes, it did. Pad, and then went on to the LBW है इससे साफ जाहिर होता है कि फास्ट बॉलर्स को भी इस विकेट पर खेलना इतना ही मुश्किल है जितना कि स्पिनर को. इसके लिहाज से तो पाकिस्तानी बैट्समैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा. 250 से ज़्यादा रन वेस्ट इंडीज के अगर हो गए तो पाकिस्तानी बैट्समैन को भी काफ़ी टफ टाइम मिलेगा. एंड्रोज बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं. आगे इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया. वसीम अकरम नसीम की काउंटी की तरफ से खासतौर पर वनडे गेम्स में उन्होंने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. वक़ार यूनुस 5 विकेट लिए एक इनिंग में 3 मरतबा. अच्छा बॉल वक़ार यूनुस का. यॉर्कर विकेटों में आता हुआ. ये वही वक़ार स्पेशल है हारून जो हिट इन करती है आकर. वक़ार 5वां विकेट हासिल करने में कामयाब. बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है और वही बात कि पुराने बॉल के साथ जितना अच्छा स्विंग और जितना अच्छा कंट्रोल वक़ार ने दिखाया है उससे यंगस्टर्स को काफ़ी सबक सीखना चाहिए जो भी इस तरह बॉलिंग करते हुए देख रहे हैं वक़ार यूनुस को. एम्ब्रोज आउट 2 रन बना के. ये इस सीजन में इनकी चौथी दफ़ा 5 विकेटें हैं एक इनिंग में. हमें ये बेंच से पूछना पड़ेगा कि इस किस्म का कोई रिकॉर्ड है कि एक सीरीज में या एक सीजन में सबसे ज़्यादा 5 आउट करने का. ये एक्शन रिप्ले वक़ार का आउट स्विंग और एम्ब्रोज के लिए इन स्विंगर बिल्कुल विकेटों के सामने उनके पैर पे लगा. रेगुलर बैट्समैन नहीं है इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश. एक स्लिप, एक गली, चिली पॉइंट, शॉर्ट मिड ऑन और शॉर्ट स्क्वायर लेग. मुझे लगता है वक़ार की कोशिश होगी कि गेंद अंदर लेके आए. यॉक करने की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने बाउंस करने की कोशिश की लेकिन गेंद ज़्यादा ऊंची नहीं आई. ऐसे बिल्कुल आप इतनी
ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर से गेंद इन्होंने शूट किया, जो कि शॉर्ट पे खड़े हुए फील्डर एजाज के लगी काफी जोरदार हिट थी और एजाज काफी तकलीफ में, ये देखिए शूट किया और एजाज ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, नाकाम रहे, काफी जोर से गेंद लगा है उन्हें। जिस किस्म का हेन्स ने शॉट खेला है, इससे साफ जाहिर होता है कि हेन्स की हिकमत अमली यही है कि किसी तरह इसी ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल कर लें देता है। इसी स्टेडियम पे 3 बैट्समैन 99 रन से आउट हुए हैं एक टेस्ट मैच। वसीम अकरम हेन्स को, और वो अपना 1 रन बनाने में कामयाब, और इस तरह हेन्स ने अपनी पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ बनाई। एक बहुत ही अच्छी इनिंग हेन्स की, बहैसियत कप्तान वो इस इनिंग को काफी अच्छे तक याद रखेंगे। हेन्स के 100 रन 306 मिनट्स में बने, 206 बॉल जिन्होंने खेली और 7 चौके लगाए। 215 रन, 8 खिलाड़ी आउट वेस्ट इंडीज, हेन्स बैटिंग कर रहे हैं 100 रन पे। बहुत अच्छी इनिंग है इनकी, ये देखिए काफी खतरनाक रन था ये। जी हाँ, मगर बेचैनी इतनी थी इन्हें तो उन्होंने चांस ले लिया। और कादिर का ये थ्रो अगर विकेट पे लग जाता तो, and even on the first day here that's not been the case, and from the fast bowler's point of view one can only dread to think what will be happening on the last couple of days. Well, just sheer frustration for Wasim Akram in that over, and at the end of it somehow Bishop still survives. He's got 12, Haynes 113, 237 for 8, and a ball that was a little bit high going down the leg side. Umpire said not out, so we've come to the end of an enthralling first day of the series. That's the onside field. And the slips being now strengthened. 2 slips. Haynes beaten outside the off stump. Haynes now has 5,828 runs in Test cricket. He's facing Wasim Akram. He's got 3 deliveries to move away outside the off stump. Let's see whether he brings the next one in. Oh, they're appealing for LBW and he's out. Yes. Well, I think Desmond looked at that particular delivery, as you said, whether or not he's going to bring that one in. In fact, he did. And it'll be interesting to see in the replay that that ball must have stayed within the stump. And possibly outside off the ball, so that coming into the batsman, which he carried up. And what a magnificent innings. I mean, one of the best runs we have seen on this ground, because if you look at the score, the total is 243, and the West Indian captain has scored almost half of those. There it is. Straightest delivery. Yes, that one was a straightest delivery, and I think Desmond probably thought that this is also going away from him to an angle which he was beaten twice in that over. He probably thought that going to be the same one, but this time it was a straightest delivery, and Desmond not offering any stroke was at just LBW. So 243 for 9, and of Haynes'
15 test hundreds, I'm sure this must rate very, very high. He's a real captain's knock. Absolutely. And 302 runs in test cricket. And it's Bishop now to face up to Waqar Yunus, going right arm around the wicket, and there's going to be a conference between the two batsmen. Also got a first class 100. Yes. 30 not out as his highest, so he's probably enjoying himself there. वसीम अकरम वॉच और अगले कदम पे आते हुए एक अच्छा कवर ड्राइव और 3 रन का इजाफा. बहुत ही कीमती रन वेस्ट इंडीज के नुक्ता नजर से. ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की. बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सलीम यूसुफ के पास, और इस तरह ये आखिरी विकेट वेस्ट इंडीज की 261 रन के स्कोर पर गिरी. बिशप एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हुए. उन्होंने 22 रन किए. बिशप ने जितना अच्छी बैटिंग की उतने ही खराब शॉट मार के वो आउट हुए. गेंद काफी बाहर था और उन्होंने इसको बाहर जाती हुई गेंद को खुद ही छू दिया. इतना अच्छा गेम नहीं था, मगर उन्होंने जी खुद भी नाराज लगते हैं अपने आप से इस बात पर, इसलिए कि बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने. 22 रन बहुत ही ज़्यादा कीमती 22 रन हैं ये, और अगर पाकिस्तान लीड नहीं ले सका तो यही रन जो है पाकिस्तान को काफ़ी मुश्किलात में डाल सकते हैं. और क्या करती है जी हाँ, ये इस वक्त वेस्ट इंडीज का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं. ग्रेनिज LBW वकार 3, हेन्स LBW वसीम अकरम 117, रिचर्डसन, स्टंप सलीम यूसुफ, बोल मुश्ताक 26, बेस्ट रमीज राजा ने कैच किया, मुश्ताक ने उन्हें आउट किया 1 रन. हूपर के LBW किया वकार यूनुस ने 8, लॉगी को सलीम यूसुफ ने कैच किया, वसीम अकरम की गेंद पर 25. बीजों मियादाद ने कैच किया, वकार बॉलर थे 17, मार्च